Hi everyone, this is NeelamSohaib, and in this video we will discuss about a new chapter of geography, which is using the coast. Uses of the coast. Besides being used for holidays and leisures, coasts also provide us with some of our food and electricity and certain fuels and minerals. As we know that coasts are used for different purposes like holidays, leisure, electricity production, fuels, minerals, and food. In this picture, in this diagram, you can see different uses of the coast. Why are coasts important? We get food, seafood from the water. We use the coast for the recreation, for holidays purposes, for different sports activities. We use coast for trade purposes, for import and export. We use coast for tourism, to get money from the tourist, which is an important element in the growth of the country. We use coast for the country defense system, for example, the naval system. We use coast for the transportation in different countries. For example, in Malaysia, people use coast for traveling, for transportation, because that is the island, and from one island to the other island, whenever they will go, they use boats and ships, and they use coast for traveling. Coasts are important for the settlement purposes as well. Coasts are also important for different industries. For example, for the electricity production, for fuels extraction, for minerals, etc., etc. So these are different uses of the coast. कोस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए. हम फूड भी हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिश, और हम कोस्ट को जो है वो छुट्टियां गुजारने के लिए जब जाते हैं बहुत सारे ममालिक में, तो हम देखते हैं वहाँ पर जो आइलैंड्स और बीचेस हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. पीपल लव to visit those places. So coasts are important for those purposes as well. ट्रेड के लिए यूज होती है, टूरिज्म के लिए, डिफेंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए. तो ये सारे यूजेस जो हैं वो कोस्ट के हैं. नेक्स्ट इज फिश एंड शेलफिश. Fish and shellfish are important human food. Many of them are caught in the shallow waters by using small nets or the lines with baited hooks. These baited hooks are actually the hooks which have very heavy weights. Every coastal village has fishing boats for their food needs, for example, crabs and lobsters. And fish are caught using small nets or lines with weighted hooks or baited hooks. Shellfish such as crabs and lobsters are caught in the baited traps on the bottom of the sea. Some of the fish we eat come from the deep ocean, far from land, and large fishing boats, trawlers, sail from ports on the coast to catch the fish, come from the deep ocean. And some deep sea trawlers bring their catch back to the port to sell. And but many pass their catches to factory ships out at sea. On the factory ships, the fish are processed and frozen while still at sea, and this allows the trawlers to stay at sea for weeks or even months at a time. So they took a lot of time to complete this whole process. So these are all about the fish and the shellfish. जैसा कि हम जानते हैं कि फिश एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फूड है, और फिश को पकड़ने के लिए स्मॉल नेट्स यूज़ किए जाते हैं. कुछ ऐसे नेट्स भी यूज़ होते हैं जिनके साथ हैवी वेट्स लटकाए जाते हैं, ताकि जब उसको पानी में फेंका जाए तो वेट्स जो है वो नेट को नीचे तक, समंदर की तह तक जाने में मदद करे, और जब उसको ऊपर खींचते हैं तो उसके साथ बहुत सारी फिश जो है वो आती हैं, मछलियाँ बहुत सारी ऊपर आ जाती हैं. और फॉर एग्जांपल क्रैब्स और लॉबस्टर्स जो हैं वो इसी तरीके से पकड़े जाते हैं. बहुत बड़ी बड़ी फिशिंग बोट्स जो हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, और ट्रॉलर्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं.
ताकि मछलियों को पकड़ा जाए उन जगहों से जहाँ पर आम नेट जो है वो नहीं पहुंच पाता, या उसका इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होता, वो इतना लंबा नहीं होता कि वो डीप डाउन जाके उसको पकड़ सके। उसके लिए फिर लार्ज फिशिंग बोट्स और ट्रॉलर्स यूज किए जाते हैं। Next is ways of catching fish. There are different ways of catching fish at sea. Three important ways are drifting, trawling, and purse-seining. In this picture, you can see different shapes of drift net, trawl net, and purse-seining. Now we will discuss about these three important ways to catch the fish. Drifting. In this process, large floating net is used, which is unbreakable and invisible too. And different type of fish are caught by this way. For example, dolphin, whales, sharks, turtles, and rays. And you can see this net is having two sides, and on the both sides, boats are used. One boat is catching this one side, and the other boat is catching the other side, so that they can pull the net upward after getting the fish. So this is a drifting method. इस मेथड में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग नेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो अनब्रेकेबल भी होता है और वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आता, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो मछलियां हैं वो इससे पकड़ी जाती हैं, जिनमें डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, टर्टल और रेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इस नेट को इस्तेमाल करने के लिए दो बोट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। एक बोट जो है वो उससे एक नेट का एक हिस्सा पकड़ा जाता है, और दूसरी बोट जो है वो नेट के दूसरे हिस्से को होल्ड करती है। इस तरीके से ये पहला मेथड है जिससे मछलियां बड़ी आसानी से पानी में से निकाली जाती हैं। दूसरा मेथड, the second way, is trawling. In this method, trawl nets are conical bag-like and work on the principle of filtering water to catch fish. It is an efficient method for catching fish and prawns which are living at the bottom or in mid-water. It is operated by one or two boats. इस मेथड में, इस ट्रॉलिंग के मेथड में ट्रॉल नेट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ट्रॉल नेट्स जो है वो बिल्कुल कोन्स की शक्ल के बैग्स होते हैं, जिनको जब पानी में फेंका जाता है विद द हेल्प ऑफ टू बोट्स, तो ये एक कोन की तरह की शेप होती है, और जब पानी में ये जाते हैं तो ये पानी इस नेट में से बाहर निकल जाता है, और जो मछली है वो इस नेट में रह जाती है। और जब इसको बाहर खींचा जाता है तो मछलियां इस नेट में फंस जाती हैं और वो आराम से बाहर आ जाती हैं। एफिशिएंट मेथड है जिससे बहुत सारी इकसाम की मछलियां पकड़ी जाती हैं, स्पेशली प्रॉन्स, और वो वाली मछलियां जो पानी की निचली सतह और दरमियानी सतह पर होती हैं उनको इजीली इस मेथड से पकड़ लिया जाता है। और इस मेथड के लिए दो बोट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि वो दोनों बोट्स ट्रॉल नेट के एक सिरे पर एक बोट और दूसरे सिरे पर दूसरी बोट जो है उसको वो खींच सकें। तो इस सारे मेथड के लिए हमें दो बोट्स रिक्वायर्ड होती हैं। सो ये एक और अच्छा मेथड है, तरीकाकार है जिससे फिश कैचिंग जो है वो की जाती है। अब थर्ड मेथड की तरफ जाते हैं। दिस इज एन अदर method, which is the third method, and this is called purse-seining. In this method, a large wall of netting designed to be set by two boats around an entire area of fish, and this is also an efficient method enabling fishers to catch and freeze fish. इस मेथड के अंदर भी नेट इस्तेमाल होता है और दो बोट्स भी यूज होती हैं, और ये जो नेट है वो स्पेशली उस एरिया पर, उस जगह पर फैलाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा फिश मौजूद होती हैं। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेथड है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जा सके, और फिर जो ज़रूरत के हिसाब से जो मछली रिक्वायर्ड होती है उसको अलहदा किया जाए, और जो एक्स्ट्रा फिश पकड़ी जाती हैं उनको फ्रीज करके बाहर के ममालिक में भेजा जाए ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये बोट की हेल्प से इस नेट को यहाँ पर पानी में फैलाया गया है, और सिर्फ उसी जगह पर इस नेट को फेंका गया है जहाँ पर
ये देखा गया है कि मछलियाँ ज़्यादा मौजूद हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ इस नेट में आएँ और उसको फिर बाहर निकाला जा सके। Fish farming. Fish are farmed in 3 different areas. First one is the sheltered bay. This is a part of a coast where the land curves inward and is protected from wind and rain. You can see in this picture, this is a sheltered bay and it is protected from wind and rain, and the land is in the curved form. The second area is the inlets. Inlets are narrow bodies of water where a large body runs out into another large body of water. The construction of the inlet results in a fast current that will toss baits around and provide excellent fishing opportunities as well. In this picture, you can see this inlet. And the third is estuaries, partially enclosed coastal body of water in which river mixed water with the seawater with a free connection to the open sea in the special fish farm. For example, crabs, oyster, mussels, prawn, salmon, and different type of other fish. Oil and gas. World's oil and natural gas is pumped from the rocks of the seabed. Rigs are used to drill wells down to the oil or gas. The oil or gas is then taken ashore by pipelines or tanker ships. The oil is sent to a refinery for processing into petrol, diesel oil, heating oil and fuel. ऑयल एंड गैस जो है वो भी पानी की सतह पर बहुत सारे रॉक्स होते हैं जहाँ पर ये मौजूद होती है, और सबसे पहले तो इसका पता लगाया जाता है कि कहाँ पर ऑयल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। जब पता लगने के बाद फिर वहाँ से उसको निकालने का एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, और रिग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि वो ड्रिल किया जा सके वो कुएं ऑयल और गैस के जो मौजूद हैं। तो इस तरीके से ऑयल और गैस जो है उसके ज़खायर फाइंड आउट किए जाते हैं, फिर उनको रिग्स की हेल्प से जो है वो ड्रिल किया जाता है ताकि उन तक रसाई हो सके, और फिर पाइपलाइंस और टैंकर्स की मदद से उनको बाहर निकाला जाता है, और ताकि वो रिफाइनरीज में भेजा जा सके, ताकि वहाँ से उनको डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनकी जो उसमें मौजूद है उनको अलग-अलग किया जाए फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल अलग किया जाता है, उसमें से डीजल ऑयल सेपरेट किया जाता है, फिर हीटिंग ऑयल और फ्यूल्स वगैरह जो कि डिफरेंट मशीनरीज और डिफरेंट चीज़ों के लिए ये फर्दर यूज होते हैं। Next one is electricity. World's first power station to use tidal energy to produce electricity was built in northern France. Electricity is produced in some power stations by using wave energy, coal, oil, gas, and nuclear fuels as well. How is electricity produced? Electricity is produced by power stations using seawater to cool their machines and to make the steam that run the generator to produce electricity. Coasts, being windy, are used for wind turbines to produce electricity. Salt. Salt is a valuable mineral present in the seawater. Seawater is pumped into large open-air ponds called saltpans. In the countries where the weather is warm, where the climate is too warm. After evaporation of seawater in the sun, salt is left behind and that salt is collected and then sold. नमक एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो सी वाटर में मौजूद होता है। सी वाटर जो है उसको पंप किया जाता है और फिर बहुत बड़े बड़े जो हैं वो एयर पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिनको हम सॉल्ट पैन्स कहते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और फिर इन सॉल्ट पैन्स में मौजूद जो सी वाटर इकट्ठा किया जाता है वो इवेपोरेट हो जाता है सन की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, और फिर इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद जो सॉल्ट पीछे बचता है उस सॉल्ट को कलेक्ट करके सॉल्ट हीप्स बनाए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको अपनी ज़रूरियात के लिए रखा जाता है, और जो एक्सेसिव अमाउंट होती है वो बाहर के ममालिक में उन जगहों पर उसको भेजा जाता है और रेवेन्यू जनरेट किया जाता है जिन ममालिक में सॉल्ट मौजूद नहीं है या सॉल्ट पैदा नहीं होता। I hope you understood the concept.
and the whole chapter. But please do not forget to read it well. Watch the video again and again so that you can understand this whole concept. This is a Sadqa Jariya, and please be a part of this Sadqa Jariya by watching and sharing the videos as much as you can. Thank you so much. Good luck.